Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn Braille with Fatima Khan. Today we are going to talk about a very important topic which is introduction of visual impairment. What it means, how it's classified and how it affects learning. So let's begin. What is visual impairment? Visual impairment means there is a problem or damage in the visual system that affects a person's ability to see properly. It can range from partial loss of vision loss, यानी कम नजर आना, to complete blindness, अंधापन. For example, if a child cannot read the blackboard clearly even with glasses, that's a visual impairment. And if someone cannot see anything at all, that's called blindness. Legal classification of visual impairment. There are two main categories. The first one is legally blind. A legally blind person has visual acuity of 20/200 or worse in the better eye even after correction, or has a restricted field of vision less than 20 degrees. यानी अगर किसी इंसान को 20 फीट दूर लिखा हुआ तभी नज़र आता है जब एक नॉर्मल इंसान 200 फीट दूर से देख सकता है, तो वो लीगली ब्लाइंड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु कैन ओनली सी लार्ज शेप्स और शेडोज नॉट डिटेल्स इज लीगली ब्लाइंड. द अदर कैटेगरी इज पार्शली साइटेड. A partially sighted person has visual acuity between 20/70 and 20/200 in the better eye even after correction. यानी इनकी नज़र कमज़ोर होती है लेकिन ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे चेहरे पहचान लेते हैं या लाइट एंड डार्क में फ़र्क समझते हैं. मिसाल के तौर पर, a student who needs to sit in the front row to see the board clearly is partially sighted. Educational classification of visual impairment according to IDEA. IDEA focuses on how vision loss affects learning. An impairment in vision that even with the correction adversely affects a child's educational performance. Let's break it into three main types. Totally blind or blindness. These individuals receive no useful information through vision. They depend on tactile and auditory hearing senses for learning. Let's take an example. No vision at all, only light perception, can sense day or night. They use braille to read and learn. जो बच्चे कुछ नहीं देख सकते वो अपनी उंगलियों से ब्रेल पढ़ते हैं और आवाज़ों से चीज़ें समझते हैं. Functionally blind, these children have a little vision, just enough for movement or shape detection, but not for reading or detailed work. They learn mainly by touch and hearing, but sometimes use limited vision for small tasks. Let's take an example. A functionally blind student may use hearing to follow a teacher's instructions, but might use limited vision to move around the classroom safely. यानी इन्हें थोड़ा बहुत नज़र आता है जैसे लाइट या शेडोज, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए ये टच और सुनकर सीखते हैं. लो विजन. A low vision child can use some vision to read or learn but not completely. They may use magnifiers, large print books or special devices to help. They can read large letters but not small ones, may have difficulty recognizing faces or colors, may need special lighting to see better. लो विजन बच्चे थोड़ा देख सकते हैं लेकिन उनको हेल्प चाहिए होती है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास या स्पेशल बुक्स जिनमें बड़ा फॉन्ट लिखा हो. तो टोटली ब्लाइंड की विजन एबिलिटी क्या होती है? नो विजन एट ऑल. एग्जाम्पल यूजेस ब्रेल. ये क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रेल यूज़ करते हैं. फंक्शनली ब्लाइंड जो होते हैं उनकी विजन एबिलिटी क्या होता है? वेरी लिटिल विजन होती है, और ये क्या यूज़ करते हैं? टच और हेयरिंग के ज़रिए अपना काम चलाते हैं. थर्ड वन इज़ लो विजन. सम यूजेबल विजन. इनके पास थोड़ी बहुत यूजेबल विजन होती है. ये मैग्नीफायर्स और लार्ज प्रिंट को यूज़ करते हैं. So friends, now you know what visual impairment is and how it's classified both legally and educationally.
Remember, every visual impairment person has unique strengths and different learning needs. Let's create awareness and make education accessible for everyone. Don't forget to like, share, and subscribe to Learn Braille with Fatma Khan, where we make learning inclusive and inspiring. Jazakallah and Allah Hafiz.